Hello everyone, as you know very well that today I am going to explain connective tissue. So regarding in connective tissue, as you know the name is there, packing, supporting and connecting tissue means connection, it will connect two things. It will bind, it will support in our body. In previous video I explained you about areolar tissue. Areolar means loose connective tissue because cells and fibers they are embedded in matrix loosely. In today's video I am going to dense regular connective tissue. So here what does it mean? Dense means fibers and cells they are densely packed. Means क्या होंगे? पास पास होंगे. कहाँ होंगे पास पास? मैट्रिक्स में. So here मैट्रिक्स जेली लाइक नहीं होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा. That's why its name is there, dense regular connective tissue. So dear student, dense regular connective tissue is a fibrous connective tissue. It is characterized by ordered and densely packed collection of fibers and cells. It is the principal component of tendon and ligament. So we can say here dense regular connective tissue is a two type. It is of two type. First tendon and second is ligament. So I think you are familiar about these words. We will go in detail today. What are tendon and what are ligament and their function and where they are present. So tendon, it is a fibrous tissue and it is cord-like and maybe in sheet form. It has great strength, means it is strong and tough tissue. So it has but limited flexibility. इसमें क्या होगी? Limited flexibility. Or we can say simply it is inelastic. Tendon are inelastic. Just you can imagine आपका क्या है? ये पार्ट क्या है? आर्म है आपकी. आर्म क्या है? स्किन है. और स्किन के नीचे क्या है? आपके मसल्स हैं. तो इनको करने के लिए कौन सा टिश्यू था? लूज. अब मसल के नीचे क्या है? आपके बोन्स भी हैं. तो मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम कौन सा टिश्यू कर रहा है? डेंस रेगुलर टिश्यू. मीन्स हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? टेंडन. तो क्या ये पार्ट आप बीच में से फ्लेक्सिबल हो सकता है क्या? नहीं ना. इट इज inelastic. Elasticity will be there. Limited flexibility is there, but we can say it is inelastic. And now very important, connects bones to muscle. ये हमारी बोन और मसल्स को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है. So dear student, it is very important feature of tendon. सिंपल आपको मैम एक ट्रिक बताएंगी कैसे आप लर्न करोगे टेंडन और लिगामेंट को. जस्ट when I will go through that ligament. So main feature, it will connect bones to muscle. It is made up of white fibers. Mean white fibers, they are made up of white collagen fibers and the protein is there in collagen protein. What is the name of protein? Collagen. That's why they are called the white collagen fibers. So I think this concept is clear because this thing I have discussed already in areolar tissue. So we can say tendons are formed by white fibrous tissue and fibers are white and formed of collagen protein. And here cells are called sometimes tendinocyte. What is the name of cell? Tendinocyte. So I think tendon is clear. Now ligament. अभी हमने इस आर्म की बात करी. अब हम ऊपर वाली बोन और इस बोन के बारे में. तो यहाँ क्या है? जॉइंट है. व्हाट इज देयर? बिटवीन टू बोन्स जॉइंट इज प्रेजेंट. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? आई थिंक यू नो. द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट. अब इस जॉइंट में इन बोन्स को एक जगह जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लिगामेंट. दैट्स व्हाई इट इज कनेक्टिव टिश्यू. तो अब आप अगर ये फ्लेक्सिबल होगा या नॉन फ्लेक्सिबल? इट विल बी फ्लेक्सिबल. सो डियर स्टूडेंट, इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. उससे क्या होगी? इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी. मीन इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग.
and it is very elastic. Tendon क्या थे? Inelastic, and but they are very elastic. That's why we are able to just hold this joint. Now again, very important feature, connects bones to bones. तो बोन को एक दूसरे से कौन कनेक्ट कर रहा है? लिगामेंट. अब आप इस फीचर को एक फार्मूले से लर्न कर सकते हो. जस्ट लिगामेंट आपको लर्न करना है, बिकॉज वन एमसीक्यू क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम. आपने सबने एलबीडब्ल्यू सुन रखा है, एलबीडब्ल्यू क्रिकेट में. अब आप एलबीडब्ल्यू की जगह आप क्या याद कर लो? एलबीबी. एलबीबी मीन्स लिगामेंट किससे ज्वाइन कर रहा है? बोन को बोन से. एलबीबी, बोन टू बोन, विच किससे जुड़ गया? लिगामेंट. और टेंडन में आप याद कर लो टीएमबी. टीएमबी मीन्स मसल को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन. So these things you have to keep mind so that it will be easier for you learning. Now here it is again made up of yellow fibers. Yellow fibers में क्या होता है? Elastin protein होता है. That's why it is very elastic in property. Here again little matrix is present. So if I will talk about ligament, you have understood. If I am going to differentiate tendon and ligament, so you can understand tendon is a thick, tough and non-elastic connective tissue, whereas ligament is a strong but elastic bond of connective tissue. Tendon is connect bones, muscle to a bone, whereas ligament connects two bones. Tendon formed of white fibers, whereas ligament is formed of yellow elastic fibers. In white fiber, it is made up of collagen protein, whereas yellow fibers are made up of protein elastin. So dear student, I think you have heard the word sprain. आपने कई बार ये sprain वर्ड सुना है. तो what is sprain? किसकी वजह से होता है? Due to it is caused due to excessive pulling or stretching of ligament. That you have to keep in mind, sprain and ligament connection. So now function, tendon क्या कर रहा है? It help in movements of bones, we can say, whereas it restricts or limits the movement of bones in ligament. So I think the ligament connects bone at the joint and it hold them in position, thus enable us to move and rotate our neck, limbs, finger, etc. comfortably. I think in today's video you have understood dense regular connective tissue. In next video I will discuss with you adipose tissue. Till then, goodbye.